children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about additions and subtraction. So let's start with that. Addition. In previous class we have already learned the additions of numbers up to 4 digit numbers. We can do the additions of numbers of 5 digits and 6 digit numbers in the same way. Okay? Addition. Addition is a process in which we collect and count the given numbers by their face value that make a final total. Addend. The numbers given to be added or summed up are called addends. Sum. The total and final results means outcome obtained after additions is called sum. So just remember these terms beta. Okay. Now move on additions without carrying. Study the following examples. Example number 1. Add 32572 and 43416. Explanation. Steps number 1. Put the numbers in the columns correctly like this. हमने column wise रख लिया. Step number 2. Add the ones. हम पहले ones को add करेंगे. So 2 ones plus 6 ones is equal to 8 ones. Step number 3. Add the tens. 7 tens plus 1 10 is equal to 8 tens. Step number 4. Add the hundreds. 5 hundreds plus 4 hundreds is equal to 9 hundreds. Step number 5. Add the thousands. 2 thousands plus 3 thousands is equal to 5 thousands. Step number 6. Add the 10,000s. Means 3 10,000s plus 4 10,000s is equal to 7 10,000. Hence, the sum of the given number is 75988. I hope you understood how to add the numbers. Now, see the example number 2. Find the sums. 53342 plus 21403 plus 1012 plus 231. Solution. Arranging the addends under each other in the place value chart and adding all column wise we get. Okay, ये हमने column wise में करा. Hence the sum of the given number is 75988. कैसे? पहले ones की place को add करा, then tens, then 100, then 1000 and then 10,000. I hope you understood well. So now move on exercise 4.1. Add the following. So first one is given beta 44026 and here it is given 1, 3, 6, 5 and 3. So add all the numbers. 6 and 3, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 2, 7, 6 ka 6, 4, 5, 6, 7 and 4 and 1, 5. So this is the answer of that one. So these are the other questions. You have to do it your own beta. Okay. So now move on. Addition with carrying. Example number 1. Add 75364 and 23678. Solutions. So सबसे पहले इन्होंने column wise में कर दिया. Explanation. Step number 1. Put the numbers in the columns correctly and add. Step number 2. Add the ones. 8 ones plus 6 ones is equal to 14 ones. तो 14 ones का 110 plus 4 ones. Write 4 under the ones column like this. ठीक है? Carry over 1 to the tens place और जो 1 है ऊपर चले गया. Now step number 3. Add the tens. अब tens को add करना है हमने. 110 मतलब carried over plus 6 tens plus 7 tens is equal to 14 tens. And 14 tens कैसे होता है? 10 tens plus 4 tens means 100 plus 4 tens. Write 4 under the tens column. Carry over 1 to the hundreds और जो हमारा carry है वो 100 की place पे चला जाएगा. ठीक है? Now step number 4. Add the hundreds. 100 means carried over plus 400 plus 600 is equal to 100 hundreds, 11 hundreds. So 1000 plus 100s, write 1 under hundreds columns. तो अब आपने इस तरीके से 100 की कॉलम पे 1 लिख देना है. ओके. कैरी ओवर 1 टू द 1000 प्लेस. अब जो 1 बचेगा वो 1000 की प्लेस पे चला गया. नाउ स्टेप नंबर 5. Add the 1000. अब 1000 की बारी है. So 1000 means carried over plus 5000 plus 3000 is equal to 9000. Write 9 under 1000 column. तो आपने क्या करना है?
1000 के कॉलम पे 9 लिख देना है. ओके, देन स्टेप नंबर 6, उसके बाद क्या करोगे आप? ऐड द 10,000. अब आपने 10,000 को ऐड करना है. 5 10,000 प्लस 3 10,000 इज इक्वल टू 8 10,000. Write 8 under the 10,000 column. Hence the sum of the given number is 89144. Okay, so this is example number 1 and its solutions. I hope you understood all. Now see example number 2. Add 364988 and 438897. Solution. Arranging the addends under each other in the place value chart and adding column wise we get, हमें क्या मिला? सबसे पहले ones की place, then tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. Hence the sum of the given number is like this, 80388. I hope you understood. Now example number 3. Find the missing digits. So हमने क्या करना है? कुछ नंबर्स दे रखे हैं और कुछ ब्लैंक्स मिसिंग्स है इसमें. सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1, ऐड द वंस. हमने वंस को ऐड करा. 7 ones प्लस 5 ones प्लस 6 ones इज इक्वल टू 18 ones. सो 18 ones 110 प्लस 8 ones. राइट 8 अंडर वंस कॉलम इन द सम, कैरी ओवर 1 टू द 10 प्लेस. हमने 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और क्या करा? जो 1 है वो ऊपर कैरी चला गया. स्टेप नंबर 2, ऐड द टेंस. अब टेंस को ऐड करना है. 1 10 प्लस 2 टेंस प्लस 3 टेंस इज इक्वल टू 6 टेंस. बट इन द सम देयर आर 9 टेंस. भाई यहाँ पर 9 तो पहले से दे रखा है यहाँ पर. ओके, देयरफॉर द मिसिंग डिजिट्स इन द टेंस प्लेस मस्ट बी 3. तो यहाँ पर ये 3 होगा, तभी ऐड करने पे हमें 9 आया होगा. ओके, सो नाउ स्टेप नंबर 3, ऐड द हंड्रेड्स. अब हम 100 को ऐड करेंगे. 500 प्लस 800 प्लस 300. सो 5 8 3 को ऐड करने पे मिला हमें 1600. ओके, सो ये हमें 1600 मिला. सो 1000 प्लस 600, राइट 600 हंड्रेड्स कॉलम इन द सम, कैरी ओवर 1 टू द 1000 प्लेस. जो 1 हमारा 1000 के प्लेस पे कैरी हो गया. नाउ स्टेप नंबर 4, ऐड द 1000. अब हम 1000 को ऐड करेंगे. 1000 प्लस 7000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 12000. बट देयर आर 14,000 इन द सम, पर यहाँ तो 14 दे रखे हैं. देयरफॉर द मिसिंग डिजिट्स इन द 1000 प्लेस मस्ट बी 2. तो यहाँ पर 14 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही तो होगा, तभी तो ऐड करने पे 14 आया. सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू द मिसिंग नंबर, ओके, ऑफ एडिशंस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा. So now move on exercise 4.2. Add the following. First one is given 6, 6, 3, 4 and 6. Second one is given 2, 4, 7, 6, 6. Okay. So add both the number. So 6 और 6 12 का 2, carry 1, 6 4 10 और 11 का 1, carry 1, 7 और 3 10 और 1 कैरी 1, 6 for 4 10 और 1 कैरी 1, 6 और 2 8 और 9. ओके, सो 91,112 is the answer of that one. So this is very easy. You only need to do practice, beta. Okay, do practice and solve other answer yourself. Okay, so now move on next one, which is properties of additions. First, order property of addition. If we change the order of the addends, there is a no change in the sum. Okay, next example. हम example से समझते हैं इसको. 32145 plus 3000. So if you add all the numbers, then you will get 35145. इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर ये होता है. And 3000 plus 32145 is equal to same 35145. तो आपने क्या करा? इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, बट आंसर हमारा सेम है. Thus 32145 plus 3000 is equal to 3000 plus 32,145 is equal to 35,145.
I hope you understood the property. Now property number second, which is grouping property of addition. When 3 or more numbers are added, the sum remains the same regardless of the way addends are grouped. Example, 38677 plus 47958 plus 29975. तो ये हमारा जो नंबर है ये क्या कर रखा है, पहले के दो नंबर को ब्रैकेट में लिखा है और तीसरा नंबर सेपरेट है. तो फर्स्ट टू नंबर को ऐड करने पर आपका जो आंसर होता है बेटा 86635. इफ़ यू जस्ट ऐड दिस टू नंबर योर आंसर इज दिस and the third number remains same 29975. So now you add two numbers, then your answer is 116610. Similarly इसी तरीके से अब इसमें आपने क्या करना है, लास्ट के दो नंबर को ऐड कर देना है. जस्ट लाइक 38677, ठीक है, प्लस 47958 प्लस 29975. अब आपने क्या करा है, लास्ट के दो नंबर को ब्रैकेट में लिखा है, इन दोनों को ऐड करना है फर्स्ट में. तो जो फर्स्ट है हमारा 38677 ये हमारा सेम रहेगा. इन दोनों नंबर को ऐड करने पर योर आंसर इज 77933. एंड अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा सेम, विच इज 116610. Thus 38677 plus 47958 ब्रैकेट में प्लस 29975, your answer is equal to 38677 plus 47958 plus 29975 is equal to 116610. So if you just add with this method and if you just add like that way, your answer will remain same. Okay, I hope you understood the property of that. Now move on third property, which is additive property of 0. The sum of any number and 0 is the number itself. Example, 58743 plus 0 is equal to 58743 and 0 plus 58743 is equal to 58743. मतलब कि नंबर में 0 प्लस करो या 0 में नंबर प्लस करो, आंसर इज सेम. Thus 58743 plus 0 is equal to 0 plus 58743 is equal to 58743. Okay, I hope you understood the 0 property. Now fourth property, which is property of 1. The sum of any number and 1 is always the successors of that number. Example, 324357 plus 1. अगर आप नंबर में 1 प्लस कर रहे हो is equal to 1 plus 324357 is equal to 324358. ओके, अगर नंबर में 1 प्लस करो कि 1 में नंबर को प्लस करो, आंसर इज सेम. I hope you understood the whole property. Okay, just do revise beta. Now exercise 4.3. Using the properties of additions of numbers, filling the blanks. First one is 61684 plus 0. If you add 0 with any number, your answer is same. Just like answer is 61684. Just like this. Okay, B part is dash plus 0 is equal to 43775. 43775 हमारा आंसर आना चाहिए. तो 0 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि आंसर हमारा ये आएगा. हमारा आंसर सेम रहेगा बिकॉज 0 हैज़ नो वैल्यू. सो आंसर इज 43775. इफ़ यू ऐड this number with 0, your answer is 0. This is the property of additions beta. Okay, I hope you understood well. So these are the other questions, you have to fill it your own beta. Okay, now move on next, which is word problems on addition. Example number 1, there are 96789 men, 89752 women and 87501 children in a city. फाइंड द टोटल पॉपुलेशंस ऑफ सिटी. तो सिटी की टोटल पॉपुलेशंस को फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो टोटल पॉपुलेशंस ऑफ द सिटी क्या करा इन्होंने, पहले वंस को प्लेस पर ऐड करना है, देन टेंस की वैल्यू, देन 100, देन 1000
उसके बाद 10,000, उसके बाद आता है lakh. So after adding all the number, your answer is 274042. Okay, that means 2,74,042. I hope you understood well. So now move on example number 2. There were two candidates in an assembly elections. Two candidates हैं. First candidate got 359423 votes, while the second candidate got 254998 more votes than the first one. Okay, how many votes did the second candidates get? What was the total number of votes polled? So see the solution. Number of votes got by first candidate, which are 359423. Okay beta. Number of votes got by second candidate, second को कितना मिला? 359423 में हम ऐड कर देंगे 254998. ओके, सो हमने क्या करना है, ऐसे कॉलम वाइज में उसको सबसे पहले लिखेंगे. वंस की प्लेस को ऐड करना है, देन टेंस की 100, 1000, 10,000 एंड lakh. Thus the second candidate got votes. कितने मिले उसको? 6,14,421. ये उसको टोटल वोट्स मिले सेकेंड कैंडिडेट को. टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड is equal to votes of first candidate plus votes of second candidates. Okay, so this is first and second is equal to 359423 plus 614421. total number of votes polled कितने हो गए हमारे? 9,73,844. Yes, this is the answer. I hope you understood the whole concept. Okay, so beta now move on next. Exercise 4.4. There are 75644 men, 45846 women and 54170 children in a town. Find the total populations of the town. अब town की total populations कितनी होती है? So let's see. तो हमारे पास जो men हैं बच्चों, कितने हैं हमारे? 75644. ओके, वुमेन जो थे हमारे, वुमेन है हमारे, कितने वुमेन से टोटल? 45846. 45846. उसके बाद क्या है? चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन के हमारे कितने हैं? 54170. So write it 54170. So just add all the value. Okay, तो हम इसको ऐड करेंगे. 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 7 और 4 11, 4 15 और 16 का 6, कैरी 1, 8 9 10 और 6 16 का 6, कैरी 1, 5 10 14 और 15 का 5, कैरी 1, 5 4 9 और 10 और 17. Okay, so we can say that there is 1,75,660 total populations of the town. Okay, I hope you understood well. So these are the other questions. You have to do it your own beta. Okay, so now move on next one, which is subtractions. In previous class we have learned subtractions of numbers of 4 digits. Here we shall learn subtractions of numbers consisting of 5 or more digits. The method of subtractions will remain the same. Now first learn about minutes, subtrends and differences. Minutes क्या होता है? It is that number from which another number is subtracted. Okay, so remember this term beta. So now move on next. Subtrends. It is the number which is subtracted from the given number. जो किसी नंबर से subtract हो रहा है is called subtrends. Difference क्या होता है? This is the result obtained from the subtractions between two given numbers. Example, minute minus subtrends is equal to difference. Yes. Okay. So now subtractions without borrowing. Study the following examples. Example number 1, subtract 53454 from 9869
7. Okay. Solutions. Here minutes is 98697 and subtrahend is 53454. Arranging the digits of the given numbers in column forms in the place value chart and subtrahend column wise we get. सबसे पहले आपने इसको column wise कर देना है. ओके तो ये हमारे minutes है, ये subtrahend है और ये इसका difference है. Let's see the explanations. Explanation का steps part 1 is subtract the ones. पहले ones को subtract करना है. Like 7 ones minus 4 ones is equal to 3 ones. Okay. Write 3 under the ones column. Step number 2, subtract the tens. Tens को subtract करना है. 9 tens minus 5 tens is equal to 4 tens. Write 4 under the tens column. Okay. Step number 3, subtract the hundreds. 6 hundreds minus 4 hundreds is equal to 2 hundreds. Write 2 under the 100 columns. Step number 4, subtract the 1000. 8000 minus 5000 is equal to 5000. Write 5 under the 1000 columns. Step number 5, subtract the tens thousands. 9 10,000 minus 5 10,000 is equal to 4 10,000s. Write 4 under the 10,000 column. Here 98697 minus 53457 is equal to 45243. Yes, this is the answer of that one. This is how we just do the subtract. Okay, I hope you understood. Now move on next. Exercise 4.5. Here it is given, subtract the following. 97467. So write it. 97467. You have to subtract 4 4 4 0 and 4. 7 में से 4 गया 3, 6 का 6, 4 4 0, 7 में से 4 गया 3 and 9 में से 4 गया 5. So 53063 is the answer of that one. I hope you understood the whole concept. So beta, these are the other questions. You have to do it your own. Now move on next, which is subtractions with borrowing. Okay. Study the following examples. Example number 1, find the difference of 82631 and 67983. Solution. Arranging the numbers in columns with the greater number on top. Top पे हमारा greater number आता है. Okay. Step number 1, subtract the ones. हमने इस तरीके से greater number ऊपर लिख लिया. उसके बाद हमने क्या करना है, ones की place से start करना है. We can't subtract 3 ones from 1 1. नहीं हम कर सकते. So we borrow 1 10 or 10 ones from 3 tens. 11 ones minus 3 ones is equal to 8 ones. Write 8 in ones column. इस तरीके से हमने क्या करा, बोरो लेने के बाद माइनस किया और 8 लिख दिया हमने ones के प्लेस पर. स्टेप नंबर 2, सब्सट्रैक्ट द टेंस. अब टेंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं. वी कांट सब्सट्रैक्ट 8 टेंस फ्रॉम 2 टेंस. So we borrow 100 or 10 tens from 600s. So 12 tens minus 8 tens is equal to 4 tens. We write 4 in tens column like this. Okay. Now step number 3, subtract the hundreds. अब hundreds को subtract करते हैं. We can't subtract 900 from 500s. So we borrow 1000 or 10 hundreds from 2000. Okay, 1500s minus 900s is equal to 600s. We write 6 in 100 column. फिर हमने इसको 100 की column पे इस तरीके से लिखना है. Now step number 4, subtract the thousands. We can't subtract 7000 from 1000, so we borrow 1 10,000 or 10 1000s from 8 10,000s. 11,000 minus 7,000 is equal to 4,000s. We write 4 in 1000 column like this. Okay. फिर हमने 1000 के प्लेस पर 4 लिख दिया. स्टेप नंबर 5, सब्सट्रैक्ट द 10,000. अब 10,000 को सब्सट्रैक्ट करते हैं. 7 10,000 minus 6 10,000 is equal to 1 10,000. We write 1 in 10,000 column. So the difference of 82631 and 67983 is 14648.
So this is how we just subtract with borrowing. Okay, I hope you understood. Now see the example number 2. Subtract 589657 from 987456. Solution. Arrange the numbers in columns correctly. Like this. Step number 1, subtract the ones. पहले ones को करना है. We can't subtract 7 ones from 6 ones. कैसे जा सकते हैं भैया, हमारे 6 में से 7 तो जा ही नहीं सकते. So we borrow 1 10 or 10 ones from 5 tens. So 16 ones minus 7 ones is equal to 9 ones. We write 9 in the ones column like this. Okay. Step number 2, subtract the tens. अब tens को करना है. We can't subtract 5 tens from 4 tens. So we borrow 100 or 10 tens from 400. 400 में से एक borrow ले लिया. 14 tens minus 5 tens is equal to 9 tens. Okay. We write 9 in tens column. फिर हमने tens की column पे 9 लिख लिया. Step number 3, subtract the hundreds. We can't subtract 600s from 300, so we borrow 1000 or 10 hundreds from 7000. So 1300s minus 600 is 700. Okay. We write 7 in 100 columns. फिर हमने यहाँ पर 7 लिख लिया. और step number 4, subtract the 1000. We can't subtract 9000 from 6000. Okay. So we borrow 1 10,000 or 10 1000 from 8 10,000. So 16,000 minus 9,000 is equal to, yes, 7,000. So we write 7 in 1000 columns like this. Step number 5, subtract the 10,000. अब 10,000s को करेंगे. We can't subtract 8 10,000s from 7 10,000s. So we borrow 1 lakh or 10 10,000s from 9 lakhs. 17 10,000s minus 8 10,000 is equal to 9 10,000s. We write 9 in 10,000 columns like this. Okay. Now step number 6, subtract the lakhs. फिर lakhs को subtract करेंगे. 8 lakhs minus 5 lakhs is equal to 3 lakhs. We write 3 in lakhs column. So 987456 minus 589657 is equal to 397799. Okay. I hope you understood the whole steps. Now move on next. Exercise 4.6. Subtract the following. First one is given 72000 and 39877. 0 में से 7 नहीं जा सकता है. इसने इससे मांगा, टेंस ने 100 से मांगा, 100 ने 1000 से एक बोरो मांगा. सो इस 2 ने सबसे पहले इधर दिया, ये रह गया 1, इट बिकम 10, then 10, here it is remain 9 and here it is remain 9. Okay. So 10 में से 7 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 किया 1, 1 में से 9 नहीं जा सकता है, इसने बोरो लिया 11, यहाँ रह गया 6, 9 10 11 2 and 6 में से 3 गया 3. Okay. I hope you understood. So this is how you just do the next one. Okay beta. So now move on. Properties of subtractions. 1. Grouping of 0. If 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself. Example, 75633 minus 0, answer is same, 75633. Okay. Now property of 1. If 1 is subtracted from a number, the difference is a predecessor of the given number. Example, 64577 minus 1 is 64576. ठीक है बेटा, एक नंबर माइनस करने पे उससे हमारा प्रीडिसेस नंबर मिल जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ थर्ड, subtractions of a number from itself. If a number is subtracted from itself, the difference is 0. Example, 83762 minus 83762, your answer is 0. Okay, I hope you understood all. Now exercise 4.7.
Filling the blanks. 99999 99,999. आपने इसमें से 1 माइनस करना है. सो योर आंसर इज 99,998. यस. ओके. नेक्स्ट बी पार्ट है 98045 माइनस 98045. बोथ द डिजिट्स, बोथ द वैल्यू इज सेम, सो योर आंसर इज 0. अगर सेम में से सेम आप माइनस करोगे, सो योर आंसर इज 0. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. So now move on next, which is word problems on subtractions. Example number 1. There are 56875 bags of wheat and 48775 bags of sugar in a warehouse. How many more bags of wheat are there in the warehouse? Yes, solution is number of wheat bags. Wheat bags कितने हैं बेटा? 56,875. Number of sugar bags 48,775. Excess number of wheat bags, तो ज़्यादा कितने हो गए? हमने क्या करा, दोनों को माइनस करने पे हमारा आंसर आया. सो द आंसर इज 8,110. ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2. अ मैन हैड ₹765,459. Out of it, he spent ₹368,500 in constructing the house. How much amount is left with him now? तो उसके पास कितना बचा? Let's see the solution. The money the man had. आदमी के पास कितना पैसा है? 7,65,459. Okay. Amount spent on constructions में उसने कितना पैसा खर्च कर दिया? 3,68,500. ओके. रिमेनिंग अमाउंट, तो उसके पास कितना बचा? उसके पास बचा बच्चों 3,96,959. इट्स सिंपली सब्सट्रैक्शन सम. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ एक्सरसाइज 4.8. Dinesh had ₹85687. He purchased one motorcycle ₹40845. How much amount is left with him now? अब उसके पास कितना पैसा बचा? Let's see. ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उसके पास टोटल अमाउंट कितना था. तो उसके पास था 85,687 बेटा. और उसने कितना मोटरसाइकिल परचेज करा? कितने रुपीस की करी? उसने करी 40,845 की करी उसने. तो उसके पास कितना बचा? उसके पास 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 8 नहीं जा सकता, बोरो लिया, इट बन गया 16, इट रिमेन 4, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 0 4 एंड 8 में से 4 गया 4. So we can say that amount the left is 44,842. Okay, so Dinesh के पास कितना बचा? 44,842. I hope you understood well. So with this we ended the chapter. You just do practice and do rest of these exercise by your own.